We have discussed that in a class, like one of the previous sessions. Maintain master data related to SAP. Okay. So first of all, from now onwards, if anybody will say SAP in an interview, you'll get disqualified. Trust me, because we never ever call it as a SAP. It is generally known as SAP. And any kind of interviewer, any type of consultant will feel a little awkward whenever you term the name SAP. Okay, so just be very very sure. Don't call it SAP. Just go with SAP. So what is Infotype? What to maintain master data? What is master data? This is a very Employee important. related information. Employee Correct. related details. Any kind of information, information, any kind of information, which is again employee related, which is organization related, or let's say, yeah, I mean, or let's say any kind of functionality, any kind of functionality to be performed, we have to maintain Infotype. We have to maintain Infotype. Where do we maintain Infotype? How can I maintain an Infotype for an employee? Where can we maintain an Infotype? I'm into my SAP screen. Where can we maintain the Infotype? Where can we maintain all those details? So the always two transactions that we generally use. One is the PA20 and another one is the PA30. These are nothing but the T codes. One is okay, display master data, and this one is what? This one is maintain master data. Okay, so I'm into my screen. Let's say I want to go over there. How do should I go? So I can also go navigate from here. I can go into the human resource. I can go into the person. Okay, these are the end user steps only that I'm performing. But again, as a good consultant, I have to know this thing that okay, first I have to configure all of those things, but I should also know how to perform all those end user activities. Remember the end user activity thing that we have spoke about in our first couple of classes while doing the introduction and everything. One second, let me pull up that screen. Here. So I explained this thing. What are the end user activities generally you have to do, and then who is the like what is an end user easy access menu screen and what is an SPRO screen. SPRO screen is all about configuration, right? We have discussed like what is the difference between the configuration and what is the difference Yes. between an end user. Someone who is designing the system so that end user can use it. Okay, but how do I know that how the end user is supposed to use it? For that I have to test it as an end user first, right? Let's say if I have done some kind of a configuration in the back end, I have to know how to test the system. I have to know how to perform all of those activities of end users to be a better consultant, to understand what are the issues they are facing so that I can go into the back end and change all of those things. Okay, so how to maintain? So we know what is an info type. Now we know what is an info type. Info type is nothing but a four-digit code. Info type is nothing but a four-digit code, which is what is the purpose of info type? To maintain all the employee-related data, all the organization-related data, or all the data which is related to any type of a functionality which can be processed in the system. How can I see the info type? Like I can go from here,
in administration, in HR master data. I can go into the PA30 if I want to change it. I can go into the PA20 if I want to see it, display it. Okay, what is the detail is there? Okay, so let's go into the maintain and let me take an employee. Let's say I'm taking this employee. We'll go with the step how to create the employees and everything, but there is an important concept that I wanted to show you guys. So okay, let's say I want to see the organizational related details of this employee. What should I do? Here I maintain the info type. I'll go over here and maintain the info type, which is this one, which is the organization assignment. Then what should I do? I'll go over there and display the things. And then okay, I can see that okay, this employee, his name is okay, this is what I've named, first employee reference. He belongs to Tata IN company code. He belongs to TMMH. He has the controlling area of this. He belongs to the sub area of HR department. He holds the payroll area P1. He is of the employee grouping permanent India permanent, and then he's of an employee grouping salaried India permanent, like salaried employee. But since he belongs to the India, so salaried India permanent. He hired on the position of assistant management manager finance, which whose job key is assistant manager, and the part of the organization unit is this one. So this is again, this thing entirely is the organizational structure that we have created in the PPOC underscore old, that we can also see through the help of PPOM underscore old. So ये तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स हो गया. अगर लेट्स से आई वांट टू सी द पर्सनल डिटेल ऑफ दिस एम्प्लॉय, तो उसके लिए मैं इन्फो टाइप 2 के अंदर जाऊंगा. I'll go over there and display things. So now I can see the personal details of his employee, like his gender, birthplace, language, or any kind of a prefix, or what is his nationality, and all those things. Infotype 3 is related to the payroll status infotype. Like, see, generally there are thousands of infotype, but you don't have to learn all of them. It's just only the few very, very important infotype as a part of the starting, and then some of the info types which are onto the country specific side, like from 580 to 589, 10 or 12 info types. Here I can see if I want to maintain the education details of this employee, then I can use info type 22. I can use info type 8 for maintaining the basic details. I can use the info type 2007 for plan working time. I can use bank details info type, external info type, and things like that. So okay, let's say what we are saying again. Let's Here we are saying that okay, let's say info type 001 is org assignment. Info type 0002 is personal details. Info type 0003 is payroll status. This is a very important info type, the payroll status. Info type 2000, info type 0006, which is the address info type. Info type 0007, this info type is related to the time management, which is generally known as the planned working time. That okay, किस employee किस time और किस schedule के हिसाब से काम करेगा. Info type 0008, which is the basic pay. What is the basic pay or the basic salary of an of an employee? Then we have couple of info types as well, which are like IT 0009, which is the bank details. Bank detail info type is all about how the like generally do we have to credit the amount into the employee's bank account, or do we want to give him through check? So generally bank details are for those. Then one of the most important info type again, which is info type 14. This one is known as for the recurring pay. Recurring pay. Then we have another info type, which is info type 15. This one is known as additional payments. Additional payments. Then we have another info type, which is okay, we have covered this one. So these are the some of the very basics organizational management related info type that you need to have in the system to in the case to run payroll. मतलब इन info type के बिना मैं किसी भी employee का payroll run नहीं कर सकता हूँ.
in as short as that. These are the info type which has to be there in the system to run the payroll for any employee. किसी भी employee का payroll run करने के लिए मुझे ये info type system में active चाहिए ही चाहिए. Action details. Then what are the other important info type? There are some of the time management related info type as well, which are very important. Info type 2001, which is generally known for absences. Info type 2002, which is generally known for attendances. Info type 2003, it is generally known for substitution, but let's double check it. Maybe substitution or overtime, something like that. Substitution. Infotype 2005, this one is generally known as overtime. Let's see that as well. Overtime. Infotype 2006, again an important infotype. This is generally known as absence quota. Then we have another one which is Infotype 2007. This is generally known as attendance quota. Then we have couple of other ones like Infotype 2010. अब ये टाइम मैनेजमेंट के सारे इन्फो टाइप है एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट टाइम मैनेजमेंट इन्फो टाइप व्हिच आर वेरी इम्पोर्टेंट if anyone is implementing time management. Particularly only time management के अंदर these info types alongside with info type 7 and basic page. Basic page is also considered an important info type from a time management perspective. Then we have time in time out, which is info type 2011 time events. Time events. Then we have time transfer specification. And then PSL. So there are like thousands of such info type. Now there is a thing in system which is generally known as one second. Just a second, guys. Okay. Yeah. Now, whenever I talk about all of these info type, or there can be any another info type as well. Like there, I can see there are n number of info types. Okay. Now there are certain attributes of info type that I needed to like. What I'm saying is like, let's say I have this info type for an example, personal details. What are those attributes that I can control this info type through? Okay, so attributes is nothing but let's say I want to define few things about this info type. I want to set some rule about this info type. That okay, someone makes any kind of a change in this info type, then this should be happen. So what are those things? What are those parameters or rules that I want to set for this info type?
Those are generally done through the help of infotype attributes. Infotype attributes. Now, what are the infotype attributes? Again, let's go it into the system and see. It's this. This is more of a theory related thing, but again, like some people do the implementation of the infotype attributes. कुछ कंपनियां करती हैं, but from an interview perspective also, it's very highly technical topic. कभी कभी पूछते हैं ये. It's a little in detail type of a topic. कहाँ जाके मैं देखूंगा इन्फोटाइप एट्रीब्यूट्स को? लेट्स सी. One second. Got stuck. So let's note down this menu path. Again, in everyone's system, the menu path will be the same. You don't have to worry on to that part that, okay, if the menu path is showing a little differently. So to see the info type attributes, generally we have to then first go to the SAP reference IMG screen. Sorry, okay. SPRO, SAP reference IMG screen. Then we'll go on to personal management. Then we will go on to personal administration. Then we will go on to customizing procedure. Then we'll go on to info types. And within info types, we'll go on to info types again.
if I want to see the table that okay which table I am on, then how, okay, if I want to see the table that okay at a table level, how can I execute those things? I've told you this thing that how should I be able to execute. अभी ये जो मैंने एस पी आर ओ को मेनू पाथ यहाँ पे फॉलो किया है, अगर मुझे डायरेक्टली टेबल के अंदर जाके देखना हो तो मैं कैसे करूंगा, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसकी टेबल नंबर क्या है? हाउ कैन आई सी? मनाली शिवानी, मुझे ये जानना है कि अगर मैं इसको बिना एस पी आर ओ के थ्रू जाके, अगर मेरे को टेबल एंट्री से सीधे देखना है, तो पहले मेरे को ये जान, अच्छा सबसे पहले मुझे ये जानना है कि टेबल नंबर क्या है इसका, व्हाट इज द टेबल आईडी फॉर दिस वन? Remember we have spoke कि sometimes we have a table ID, we can also go through the help of a table ID. ओके, देखो ये तो मैंने जो मेनू पाथ था वो यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब अगर मुझे डायरेक्टली इस फील्ड पे जाना है और मुझे ये जानना है कि इसका टेबल नंबर क्या है, सो उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डिस्प्ले टेक्निकल इन्फो के अंदर जाऊँगा, and then display technical info के अंदर I'll go on to the attribute section, or sorry maintain object section, and now here I can see that these are the table IDs. This is for attributes and this is for infotype text. So I'll note down this table ID for a moment. Let's note down what is this table ID. There is this table ID. अच्छा, अब देखो जितनी भी ये जो स्टेप्स अपन ने यहाँ पे भी परफॉर्म की थी, जैसे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर की ये वाली स्टेप्स जो एस पी आर ओ के थ्रू मैं यहाँ से जा रहा था, या यहाँ से भी मैं एस पी आर ओ के थ्रू जा रहा था, या यहाँ से भी मैं एस पी आर ओ के थ्रू जा रहा था, नॉट नेसेसरली आई हैव टू फॉलो ऑल ऑफ द थिंग्स। तो जनरली आप एस पी जैसे अपन, जैसे कि ओके, जैसे जैसे कि अपना इजी एक्सेस मेनू है, ये अपना इजी एक्सेस मेनू है। इजी एक्सेस मेनू को मैं ऐसे स्क्रॉलर करके, मतलब सॉरी कोलैप्स और एक्सपांड करके अलग अलग फील्ड के ऊपर जाके वहां से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड भी लिख सकता हूँ, PA30, तो मैं डायरेक्टली उस स्क्रीन के अंदर चले गया। सेम थिंग जो है मैं एस पी आर ओ के अंदर भी कर सकता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन तो एंड यूजर स्क्रीन है, मुझे मालूम है इजी एक्सेस स्क्रीन इज एन एंड यूजर स्क्रीन, एंड दीज ऑल आर द एंड यूजर टास्क जो वो परफॉर्म करता है। बट वेन एवर आई एम इन एस पी आर ओ, जब भी मैं एस पी आर ओ में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। एंड कस्टमाइजेशन करने के लिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके जाए जा रहा हूँ। ओके, मैं फील्ड को सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, बट लेट्स से आई नो द टेबल, इफ आई नो द टेबल नंबर, तो अगर मुझे टेबल नंबर मालूम है तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा? सो देखो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन कोड होता है, मैं उसके लिए एक ट्रांजैक्शन कोड यूज़ करता हूँ विच इज़ नोन एज SM30। SM30, अब SM30 के अंदर क्या है कि चलो ठीक है, अभी मेरे को ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने क्या मेरे नोट्स के अंदर लिख दिया कि दिस इज़ द टेबल नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन आइटम, या दिस पर्टिकुलर इन्फो टाइप एट्रीब्यूट्स को अगर चेंज करना है तो उसका टेबल नंबर ये होगा। So I can copy paste this table number. I can like note down every single point of time here. I have this table number. ये SM30 के अंदर जाके मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। I'll hit enter। अब मैं चाहूँ तो डिस्प्ले में भी जा सकता हूँ, मेंटेन में भी जा सकता हूँ। लेट्स से आई वांट टू गो इनटू डिस्प्ले। सो देखो मैं उसी स्क्रीन में वापस आ गया। इन्फो टाइप एट्रीब्यूट्स, सेम, दिस इज द सेम स्क्रीन। सो टेक दिस एज अ लर्निंग कि अगर मुझे बिना मेनू पाथ के थ्रू जाना है तो मैं कैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। आई यूज अ ट्रांजैक्शन कोड विच इज नोन एज SM30, एंड SM30 के अंदर जाके मैं वो टेबल एंट्री डाल सकता हूँ। एंड अगेन नाउ टेल मी वेयर कैन आई फाइंड द टेबल एंट्री। लेट्स से आई एम एन SPRO, ठीक है। अपन ने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अभी किया था जिसमें अपन लेट्स से ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं।
लेट्स से अपन को पर्सनल सब एरिया क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं इस वाले मेनू पाथ के ऊपर जाता हूँ। मेरे को कैसे पता पड़ेगा, आप मुझे बताना, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसका टेबल नंबर क्या होगा। तो मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर गया, डेफिनेशन के अंदर गया, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर गया, एंड नाउ देर इज दिस पर्सनल सब एरिया जहाँ पे मैं पर्सनल सब एरिया क्रिएट करता हूँ। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसका क्या है टेबल नंबर। जस्ट एज ए रेफरेंस मेरे को खाली जानना है कि इसका टेबल नंबर क्या क्या हो सकता है। हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई फैच दोज डिटेल्स। राइट क्लिक करके ये जो एग्जीक्यूट बटन है, यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक किया मैंने, अब क्या करूँ मैं इसके अंदर। मेंटेन एक्टिविटी। नो, लेट्स से आई एम गोइंग इन मेंटेन एक्टिविटी, तो मैं तो वापस अंदर आ गया। अगेन आई एम राइट क्लिकिंग, क्या करूँ उसमें मैं जाके। देखो इस पूरी फील्ड की मुझे, डिस्प्ले टेक्निकल इन्फो। इस पूरी के पूरी फील्ड की, ये जो पूरी के पूरी फील्ड है, इसकी मुझे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मतलब बैकग्राउंड में किस तरीके डिस्प्ले से कॉन्फ़िगर टेक्निकल की गया। इन्फो। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट देता है, यहाँ पे मेंटेन ऑब्जेक्ट्स एक चीज है, वहां पे मुझे दिखाता है ये चीज। तो मेंटेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाऊंगा तो दिस इज द टेबल नंबर फॉर दिस वन। लेट मी कॉपी दिस डाउन एंड लेट मी मार्क इट ओवर हियर दैट ओके। कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज करता हूं मैं, SM30। SM30, SM30 के अंदर जाके मैं ये टेबल नंबर दे दूंगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो ये मैं मेनू पाथ भी फॉलो कर सकता हूँ, या चाहे तो मैं इसे टेबल पे डायरेक्टली भी जा सकता हूँ। तो देर आर टू वेज, चलो इसको करके देखते हैं। तो देखो अभी मैं SM30 के अंदर गया, अभी मैंने, ये कौन सी टेबल है, 001 P T001 P मेरे को मेंटेन करना है। आई एम गोइंग इनटू द मेंटेन एंड देखो ये आ गया, उसी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे मुझे पहले पर्सनल एरिया मांगेगा, मैंने मान लिया चलो इस पर्सनल एरिया के लिए क्रिएट करना है। So it is now telling me to create or change or create new personal sub area whichever I wanted. Okay. So this is another short. What is the shortcut of this one? The shortcut of this one is the transaction code. And what is the shortcut in the SPRO स्क्रीन? SPRO स्क्रीन के अंदर अगर मुझे शॉर्टकट पैदा करना है तो मैं कैसे करूंगा? इसके लिए मैं SM30 यूज करता हूँ। SM30 के अंदर मैं वो लाइन, मेरे को वो टेबल नंबर याद होनी चाहिए। नॉट यू शुड नॉट नो ऑल द टेबल नंबर्स, बट लाइक आप एक खुद की एक एक्सेल भी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आपको सारा का सारा टेबल नंबर एक साइड में आ जाए। यू कैन जस्ट कीप इट एज अ पार्ट ऑफ योर रिकैप। बट आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, लाइक इन माई प्रोजेक्ट ऑल्सो समटाइम्स आई गो थ्रू दिस फील्ड्स ओनली। ओके, now let's come back to the infotype attributes. So ये वाला पार्ट हुआ, ये शॉर्टकट वाला पार्ट हुआ, एंड आई एम सेइंग दैट ओके इन्फोटाइप एट्रीब्यूट्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। So infotype attributes are nothing but generally I am saying that infotype attributes क्या है कि जितने भी इन्फोटाइप हैं सिस्टम के अंदर, एंड इन्फोटाइप आर नथिंग, इन्फोटाइप क्या करते हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्म में। पर्सनल डिटेल है तो उसके लिए अलग इन्फोटाइप है सिस्टम में, एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए अलग इन्फोटाइप है, प्लान वर्किंग टाइम स्टोर करना है तो उसके लिए अलग इन्फोटाइप है, सैलरी डिटेल स्टोर करनी है तो उसके लिए अलग इन्फोटाइप है। तो एसएपी में हर चीज़ को स्टोर करने के लिए, एम्प्लॉय की हर चीज़ को स्टोर करने के लिए अलग अलग इन्फोटाइप बनाए गए हैं, ठीक है। अब इन इन्फोटाइप्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, देर आर सम फंक्शनैलिटीज विद इन दिस इन्फोटाइप्स। इन इन्फोटाइप्स के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज है। अब देखो जैसे कि अब उसके अंदर सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी, अब धीरे धीरे काम करते हैं उन फंक्शनैलिटीज के ऊपर बात करते हैं। व्हाट आर द इन्फोटाइप एट्रीब्यूट्स? ओके, so one of the main major functionality is something which is known as time constraints. Time constraints, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि what are time constraints. Okay, so देखो any record, ये टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं दे रहा हूँ, इट्स समथिंग दैट आई एम गिविंग फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। द टेक्निकल डेफिनेशन कैन बी समथिंग एल्स फॉर दिस फील्ड।
बट टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? सी, एनी रिकॉर्ड, मेरे को पता है कि कोई भी रिकॉर्ड अगर मुझे सिस्टम के अंदर सेव करना है तो मुझे इन्फोटाइप में स्टोर करना पड़ेगा. सो एनी रिकॉर्ड इन एसएपी सिस्टम, okay, let's say any employee record, any employee organization record in SAP system, in SAP system stored in the form of infotype, in the form of infotype. यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में ये भी डाल देता हूँ, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल थ्रू PA30, PA20. उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? PA30, PA20 की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Now, now in SAP, in SAP, we can store and change data, or let's say we call it infotype data, with respect to historical, with respect to historical times, let's say, with respect to historical records. So कहने का मतलब ये है कि मेरे पास में कोई भी इन्फो टाइप हो, मेरे पास में कोई भी इन्फो टाइप हो, लेट्स से अगर मैं इन्फो टाइप 2002 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इन्फो टाइप 2002 के अंदर 3-4 तरह की चीज़ें हमेशा स्टोर करके रख सकता हूँ. सी, एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि देखो मान लो कि है ना, अब जैसे इसका एग्जांपल मैं कैसे दूँ? अब इसका एग्जांपल अपन ऐसे समझते हैं कि लेट्स से एन एम्प्लॉई got hired, an employee got hired on 1st of January 2020, okay, from 1st of January 2020, okay, let's not take this one, let's take Infotype 2006, it will be more easier to understand through that. From 1st of January 2020 till let's say 5th May 2021, his address, his address was Pune, Maharashtra. Okay. Then from 6th of May 2021, his address, सेम एम्प्लॉय, उसी एम्प्लॉय का एड्रेस जो है इज मुंबई, महाराष्ट्र. सो कहने का मतलब क्या है कि चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि मेरा एम्प्लॉय यही है, दिस इज माई एम्प्लॉय. PA30 के अंदर जाके मैं चेक करता हूँ. सो दिस इज माई एम्प्लॉय एंड दिस इज द एड्रेस इन्फो टाइप. मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 0006. ओके, एंड लेट मी गो इनटू द डिस्प्ले मोड. सो आई एम, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसकी लोकेशन अभी बैंगलोर है. ठीक है, तो लेट्स टेक दिस सिनेरियो ओनली. सो लेट्स से फ्रॉम कब से कब तक के है? 1st of January 2021 से लेके टिल व्हाट टाइम? हिज लोकेशन इज बैंगलोर. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसका नया एड्रेस क्रिएट करना है. तो ये बैंगलोर को मैं क्या डिलीट कर दूं क्या? इसका मुझे नया एड्रेस क्रिएट करना है, इसने अभी अपना एड्रेस चेंज किया है. ओके, तो क्या बैंगलोर को मैं डिलीट कर दूं क्या?
देखो ये 2006 यहाँ पे मैंने एड्रेसेस लिख के मैं चेंज के अंदर गया। अब यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये बैंगलोर को मैं डिलीट कर दूँ क्या यहाँ पे? बैंगलोर की जगह मुंबई लिख दूँ? सही है? गाइस सही है? Yes. नहीं, देखो क्या है। अब यही यहाँ पे यही तो चीज़ आ रही है, देखो। मैंने क्या कहा कि मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को भी मेंटेन रखना है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैंने बैंगलोर को हटा के मुंबई कर दिया, बट डेट्स वही हैं। तो मतलब उसकी जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, मतलब। बट मेरे को कब से चाहिए ये चीज़? मैं तो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे 6 मई से चाहिए मुझे। 6 मई से। 2021। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसकी लोकेशन है मुंबई। हिट एंटर, सेव थिंग्स, सेव। ओके। तो ओके, ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है सिस्टम में कि जब इस एम्प्लॉय का, अगर मैं इन्फोटाइप 2006 देख रहा हूँ, दिस इज द इन्फोटाइप 2006, राइट? इन्फोटाइप 2006। देयर इज दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज ओवरव्यू स्क्रीन। ओवरव्यू के अंदर अपन सारे के सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं, पास्ट के भी। तो आई कैन डबल क्लिक ओवर हियर एंड नाउ आई कैन सी। ओके, लेट मी select all dates. I'll click onto the overview screen. Why is it not? Okay, it's not showing me previous records. Let me. ओके, अभी देखो यहाँ पे सिस्टम में क्या किया है मैंने। देर आर टू रिकॉर्ड्स। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी सेव कर रहा हूँ, मतलब हिस्ट्री को भी सेव कर रहा हूँ। ओके। जब इसने ज्वाइन किया तब इसकी लोकेशन थी बैंगलोर। ये मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ये चेंज के अंदर भी देख सकता हूँ कब से कब तक के, फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से लेके 5 मई 2021 तक के। ठीक है। नाउ आई एम सेइंग दैट आई हैव क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड। वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है, 6 मई 2021 से लेके टिल एंड ऑफ टाइम। अब वो, अब जब तक के मुझे उसका नया एड्रेस नहीं मालूम पड़ता, इट विल बी मुंबई। नाउ लेट्स से ही इनिशिएट, दिस एम्प्लॉय इज इनिशिएटिंग मी एन रिक्वेस्ट कि ठीक है, 2024 से मेरा एड्रेस वापस चेंज होने वाला है, मूविंग बैक अगेन टू बैंगलोर। सो क्या मैं मुंबई के रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा? मैं नहीं करूंगा। जनरली क्या होता है, एड्रेस इज एन, लाइक यही मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी टाइम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि कौन से ऐसे इन्फो टाइप हैं। जैसे कि अब एड्रेस इन्फो टाइप हो गया, वैसे ही ये बेसिक पे इन्फो टाइप हो गया, या बैंक डिटेल्स हो गया, या रिकरिंग पेमेंट हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट हो गया। टाइम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू मैं ये डिसाइड करता हूँ कि कौन से इन्फो टाइप्स का मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अब ये शॉर्ट स्टेटमेंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह Yes, रहा हूँ? sir. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes.
the मतलब previous data of the मेरे को employee. यस, मेरे को किसी भी एम्प्लॉय को रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है। अगर उसकी सैलरी भी मैं चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को डिलीट नहीं करना है, सिस्टम में मेंटेन रखना है। भले उसकी सैलरी आज कुछ भी है, बट मेरे पास में हिस्ट्री होनी चाहिए। सो एसएपी में ये फीचर रहता ही है हमेशा दैट ओके, यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड्स फॉर मल्टीपल टाइमलाइंस। ओके, यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड फॉर मल्टीपल टाइमलाइंस। अलग अलग पीरियड के लिए आप अलग अलग रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, बट दोज पीरियड शुड नॉट गेट ओवरलैप्ड। बट दोज पीरियड शुड नॉट गेट ओवरलैप्ड। सो सी, अगर अभी अभी ये चीज मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फोटाइप 2006 ओनली। अभी अभी मुझे ये देखना है कि इसका टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या दे के रखा हुआ है सिस्टम के अंदर। तो सी, ये जो होता है ना, ये टाइम कंस्ट्रेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि वो इन्फोटाइप परमिटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सेव करने के लिए। हर एक इन्फोटाइप नहीं हो सकता। वही मैं डिफाइन करता हूँ कि मैं SM30 के थ्रू जाऊँ डायरेक्टली, मेरे पास अब टेबल है कि मैं वापस से नेविगेट करूँ। SM30 में there is this table, I'll go into the maintain and now I can see कौन से इन्फोटाइप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। Address. Address, correct. So I'll double click over here, address. Can you see this field which is known as time constraint? In general, अभी बाकी सारी चीजें भूल Yes. जाओ, एक एक करके सब पे आएंगे। But can you see this field time constraint? Let's see what is this Yes. field all about. मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर अभी, मैं सिर्फ खाली देखना चाह रहा हूँ कि ओके व्हाट इज दिस फील ऑल अबाउट। सो आई स्क्रॉल डाउन एंड आई गेट सम इंफॉर्मेशन ओवर हियर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन? इफ आई मेंटेन टाइम कंस्ट्रेंट 1, record must have no gaps, no overlapping. इफ आई मेंटेन टाइम कंस्ट्रेंट 2, टाइम कंस्ट्रेंट 2 मतलब अगर ये यहाँ पे मैं एम्प्लॉय स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैंने ये सेटिंग्स कर दी तो कोई सा भी मैं एम्प्लॉय हायर करूंगा, एड्रेस, कोई से भी एम्प्लॉय को जब मैं हायर करूंगा और उसका जब मैं एड्रेसेस मेंटेन करने जाऊंगा, तो एज पर द टाइम कंस्ट्रेंट्स इट विल गिव मी द थिंग्स कि मैं उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सो दीज आर द टाइम कंस्ट्रेंट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी टाइम कंस्ट्रेंट्स है बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू द सब टाइप। अभी सब टाइप क्या होता है कि इन्फो टाइप को ही मैंने कैटेगराइज करके रखा हुआ है, जैसे कि एड्रेस है तो एड्रेस के अंदर परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है, टेम्पररी एड्रेस भी हो सकता है, एंड देन देर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल, करंट एड्रेस एंड लाइक एनी काइंड ऑफ अ फैमिली एड्रेस। इफ आई वांट आई कैन ऐड इट इनटू द सब टाइप। सो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये अलग अलग जो कंस्ट्रेंट्स के ऑप्शंस हैं इन द कॉन्फ़िगरेशन, इसके थ्रू मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि इन्फोटाइप का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेरे को चेंज करना है कि नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल शो करता हूँ, लेट्स ट्राई, आई एम नॉट श्योर वुड इट वर्क और अलाउ मी इन द सिस्टम और नॉट, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी अलाउ नहीं करती है। लेट्स से आई हैव चेंज्ड इट टू ए, अभी मैंने ए पे चेंज कर दिया। नाउ लेट्स सी हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग एज ऑफ नाउ। I'm again going into this one, PA30, and again taking this employee only and going into the address field and going into the display, and let's see if I can change it now or not. So let's say ये बैंगलोर भी मैं डिलीट करना हूँ अभी, है ना। ओके, आई एम नॉट गेटिंग अ डिलीट ऑप्शन एक्चुअली। अभी देखो इसके अंदर जो इन्फो टाइप मेंटेन्ड है वो मेंटेन्ड है, बट let's say I want to change the address from 1st of January 2024 and I want to define the address till 31129999। मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, परमानेंट एड्रेस को ही क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्यों मुझे ये एरर थ्रो कर रहा है, क्यों मुझे थ्रो कर रहा है ये एरर, क्यों मुझे परफॉर्म क्यों नहीं करने दे, मैं चेंज परफॉर्म करना चाह रहा हूँ या मैं कुछ यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे करने क्यों नहीं दे रहा है ये। देखो यहाँ पे भी डेट्स चेंज नहीं हुई, मैंने अभी डेट्स चेंज करने की कोशिश की थी बट डेट्स चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं करने दे रहा है ये।
नहीं करने दे रहा है ना। देखो मैंने यहाँ पे 2024 से लेके मैं उसकी डेट्स को वापस चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाके क्रिएट कर रहा हूँ, बट इट इज टेलिंग मी इन्फोटाइप एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है चलो चेंज पे गए, बट ये मुझे यहाँ पे चेंज क्यों नहीं करने दे रहा है? यहाँ पे डेट्स, ये देखो ये स्क्रॉल ही, इसको मैं यहाँ पे एंटर ही नहीं कर सकता, ये फिक्स हो गया है, फ्रीज हो गया है ये स्क्रीन। ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। 2024 कब से करना है मुझे? जनवरी से करना है। देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बट वो चेंज ही नहीं होगा यहाँ पे, ये फ्रीज हो गया है। दिस पैनल, दिस एंटायर पैनल इज फ्रीज। So I can change the details, but I can change only for this duration. But let's say, let me switch back again to the infotype attributes as T. एड्रेस की बात चल रही है ना यहाँ पे, एड्रेस की ही बात चल रही है, वो एड्रेस के अंदर ही चेंज कर रहा था मैं। बट लेट मी अगेन स्विच बैक टू टी। सेव, गो बैक। No, it can allow. Yeah, but not as of now. I have to come out of screen first. So I am coming out of screen and then I'm again going. And देखो वही dates, the same thing. Everything is same. Can I see these fields are editable now? अभी फ्रीज हो गया था वो। नाउ आई कैन एडिट दिस फील्ड्स। अभी ग्रे हो गया था राइट, यहाँ पे ये ग्रे आ गया था। अब नाउ लेट्स से अगेन आई एम सेइंग दैट ओके, नाउ हिज न्यू लोकेशन इज इंदौर। फ्रॉम 1st of January 2024 till end of time, his new location is Indore. Save, and I have successfully saved. One second, yeah, record is created. अब मैं ओवरव्यू में जाके देखूंगा तो अब नाउ आई हैव these records that okay, from 1st of January 2021 से उसका क्या था, बेंगलुरु, and now from 1st of February 20 sorry from 1st of January 2024 से उसका न्यू एड्रेस क्या है, इंदौर। So this is the infotype attributes. There are different infotype attributes, और ये खाली मैं एड्रेस के लिए नहीं कर सकता हूँ, ये मैं प्लान वर्किंग टाइम के लिए भी कर सकता हूँ, ये मैं बैंक डिटेल्स के लिए भी कर सकता हूँ। अब बैंक डिटेल्स के अंदर क्या, देखो सेम सेम काइंड ऑफ अ सिनेरियो कैन बी एप्लीक। अभी यहाँ पे तो एड्रेस में एप्लीकेबल कर रहा था, लेट्स से मैं अगर बैंक डिटेल्स की बात करूँ तो इन एम्प्लॉई, अगेन द सेम थिंग, लेट्स से आई एम टेकिंग द सेम सिनेरियो कि an employee got hired on 1st of January 2021 let's say। तो पहले उसने मेंशन किया कि his bank account, let's take this scenario only, let's say his payment method was check। Now from 6th of May 2021 till the future dates, तो future dates के लिए हम जनरली यही यूज करते हैं, 31st of December 9999, or if you want you can also put 31st of December, let's say 2100। so anything you can use for the future date। he's saying, employee is saying that okay, payment method should be changed to direct account। so देखो अब मुझे क्या, अब अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में टी या वन होगा तो ही मैं मेंटेन कर पाऊंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट कर रहा हूं यहाँ पे कि कोई भी इन्फो टाइप हो उसको मैं अलग अलग टाइम कंस्ट्रेंट्स असाइन कर सकता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर। आई होप लाइक विद दिस एग्जाम्पल यू मस्ट हैव गॉटन द आइडिया कि टाइम कंस्ट्रेंट्स के थ्रू हम जनरली क्या कर सकते हैं। जैसे अगर बैंक डिटेल है, अभी यहाँ पे भी टी है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उसका रिकॉर्ड चेंज हो सकता है, एंड यूजर उसका रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि एंड यूजर उसका रिकॉर्ड चेंज कर ही नहीं पाए, एक बार जो क्रिएट हो गया वो सिस्टम में उसके जब तक के वो टर्मिनेट नहीं होता है तब तक के रहना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट्स को जाके यहाँ पे चेंज करूँगा। सो डिफरेंट इन्फोटाइप कंस्ट्रेंट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज,
बहुत बार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछते भी हैं कि ओके व्हाट डज इन्फोटाइप कंस्ट्रेंट्स बी स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज इन्फोटाइप कंस्ट्रेंट्स 2 स्टैंड्स फॉर, 3 स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर। ओके, इन्फोटाइप कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या है? So infotype constraints is nothing. Time constraints are nothing. Time constraints are part of infotype attributes only, which controls the functionality of an infotype. किसी भी infotype की functionality को control करने में काम आता है। इस केस के अंदर अगर मेरे को हिस्टोरिकल डेटा को कंट्रोल करना है, हिस्टोरिकल डेट्स को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मैं इन्फोटाइप एट्रीब्यूट्स को यूज करता हूँ। सो सी, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा जाके छेड़छाड़ करना, बट लाइक यू मस्ट नो, एक पहले स्क्रीनशॉट ले लेना कि सिस्टम के अंदर पहले कौन से एट्रीब्यूट सेट थे। एकदम से सबको जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सिस्टम विल बिहेव वेरी ऑडली, समटाइम्स इट हैपन्स। ओके, सो आई ऑलरेडी शोन यू कि जनरली इन्फोटाइप एट्रीब्यूट्स के अंदर कैसे जाते हैं। Now there are some other attributes as well, which we will discuss. Like some of the other attributes over here we'll discuss tomorrow. Like ये किस तरह के काम में आते हैं, and there is this whole set of these attributes as well. So we'll discuss it in like this particular one I'll cover with the payroll, because this is a very different type of attributes of an info type. ये payroll related info types के लिए ये attribute है, which is known as retroactive accounting trigger. Any doubts in the infotype attributes? No, sir. Okay. For performing such kind of task, you have to have a valid employee in the system. But still, I wanted to show you guys. Maybe we can go through the entire procedure of how to hire an employee, how to create actions, and then also you can also perform this step. But at least you can go into this table and then you can practice a couple of things. और ये जो अपन ने पहले की भी कस्टमाइजेशंस कुछ देखी थी, उसको भी एक बार थोड़ा वापस से उस टेक्निक के थ्रू जाके देख लेना एंड चेक कर लेना कि ओके, अगर मैं कंट्रोलिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाह रहा हूँ तो उसकी टेबल नंबर क्या है। लाइक इट्स गुड टू मेंटेन सच टाइप ऑफ एन एक्सेल एंड स्टोर ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ऑल ऑफ दोस टेबल नंबर्स ओवर हियर। वेल, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल, कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। Okay, so that's it for today's session. I'll upload this recording, and in the meantime, कुछ कोई भी configuration में difficulty आए, so ping me personally, and अपन उस time पे check कर लेंगे कि क्या problem आ रही है।